A2141 unable to powered on. We open back cover, remove battery and connect our DC power supply. See, as soon as we on DC power supply, it's taken 0.048 amp and 4.98 volt, means 5 volts, not converting 20 volt. It's not converting 5 volt to 20 volt. This is indicate that there is something shorting inside the motherboard. Let's open the motherboard and check what is the short. The impedance level with the ground. See, there is a shorting. PP bus line is short to the ground, and this is 2141 model, and almost in this model SSD is shorted. Let's check SSD short or not. This is a 3 volt line. 3 volt line is not shorting, but SSD line, see, this is a 0.1.0.9 volt. This is a 1.8 volt. This is a 1.8 volt. See, this coil is shorted to the ground. This is indicate that there is SSD shorting in this board. This is a A2141 model, and SSD shorting is the common problem in this board. And this side SSD also we check. This side is okay. This side is okay. This side is okay. This coil also okay. This coil also okay. There is one coil of SSD. See, 1.8 volt is shorted to the ground. This is indicate that there is SSD shorting. Let's ओपन द बोर्ड, रिप्लेस द एसएसडी। जो प्रोग्राम की है इसके अंदर, इसमें दो ऑप्शन है अपने पास। एक थिक नैंड का है, थोड़ी जाड़ी नैंड आती है थिक नैंड, वो यहाँ पे लगाने की। पतली आती है थिन नैंड, वो यहाँ पे लगाने की। अभी एक साथ में हम लोग 3-4 नैंड इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। 4-4 8 नैंड कर सकते हैं प्रोग्राम। अभी हम लोग ने नैंड को क्लीन अप वगैरह करके रख दिया है। इसका टेंसिल इसके ऊपर रखेंगे। उसके बाद में इसको, इसके स्टैंड है, उसके स्टैंड में रखेंगे तो वो मैग्नेटिक पूरा पकड़ लेगा अच्छी तरह से। अब ये निकलेगा नहीं। अब इसके ऊपर फिर हमको क्या करना पड़ेगा, सोल्डर जो है, सोल्डर पेस्ट वो डाल के उसके बॉल्स अरेंज करने पड़ेंगे। बॉल अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो जो तुम्हारा पेस्ट टाइप सोल्डर है, वो पेस्ट टाइप सोल्डर लेना है आपको। वो सोल्डर क्या करोगे आप, थोड़ा सा उसका लिक्विड निकाल लेने का आपको। इसमें थोड़ा सा लिक्विड होता है कंपनी से, इसको निकाल दीजिए। चार एसएसडी को लगेगा इतना, निकाल दीजिए। और उसके बाद में उससे थोड़ा सा लिक्विड उसके अंदर होता है। उस लिक्विड को निकालने के लिए ऑयल होता है थोड़ा सा उसके अंदर, फ्लक्स, प्री फ्लक्स होता है उसके अंदर। उस फ्लक्स को थोड़ा सा निकालिए। मतलब क्या है, वो बॉल थोड़ा सा यहाँ वहाँ हिलेगा नहीं, इतना सिर्फ थोड़ा सा निकाल देने का फ्लक्स उसका। थोड़ा सा वो तेल उसमें से निकल जाएगा जो उसका फ्लक्स है इंटरनली। फिर इस तरह कोई भी हीट लगाने वाला जो प्लजर होता है वैसा लेने का आपको। ठीक है, ये जो हम लोग ने लिया हुआ है उसको उसके अंदर इस तरह लगाएंगे हम लोग। देखो, इसके बॉल अरेंज हो जाएंगे अभी। तो हर जगह पे प्रॉपर लगाना है वहाँ पे आपको।
थोड़ा सा उसको हमको क्लीन अप भी करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा हो गया रहेगा तो उसको निकाल देने का। अभी इनको बारी बारी से क्या करना पड़ेगा आपको, हीटअप करना पड़ेगा। हीटअप के लिए क्या करने का आपको, नोजल पतला ही रखना है। तीन सौ 300 तक रखा तो भी चलेगा, 40 पे रखना है। वहाँ पे देखो बॉल कैसे अरेंज हो जाएंगे अभी। एक पंखा बंद कर दो। एक बन गया, तो आगे रख लिए दूसरे के लिए। दूसरा रेडी, तीसरा, तुम्हारा टेम्परेचर और काम प्रॉपर होना चाहिए। टेम्परेचर गलत है, काम भी प्रॉपर नहीं है लगाने का वगैरह, तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, याद रखो। लास्ट वाला ये 3 प्रॉपर हो गए। ये भी हो गया प्रॉपर। ये बॉल आपके चारों के चारों अरेंज हो गए। मैकबुक प्रो 8141
i9 processor, 64 GB RAM, and 1 TB SSD. See, 1 TB SSD replacement done. Now we connect our system into the DFU process. See, 0.081 amp is taken, and our another system for recovery process we have to restore, click restore. Its process taken 2 of 4 time, and when it's complete its process step by step, see the impedance is changing 200, 240. When it's come in 1 and 2 amp, it's displaying. This Mac is on this dead Mac with the help of our DFU process. See, almost 2 ampere. One time restart and fan spin. See, fan spin. Now Apple logo is there. See, Apple logo, almost 1.5 amp, and here the 4 of 4. And if there is pedal lock, recovery process is complete, and we have to install only OS now. Thank you.